Brahma च loka dipati sahampati kat anjali andivarangayachat san idha satta aprajakha jatika dese tu dhammang anukampimang pajjang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. So here we are, coming to the end of a day of practice in the city. Sounds of the city all around, the traffic, the metro, the children, the dogs, and the sounds of the various sort of bits of machinery that keep us comfortable, the air conditioning, the heaters and so on. And today we had an opportunity to go out into the park, to practice in an environment probably not that dissimilar to the kind of parks that the Buddha would have practiced in all those years ago. The Buddha and his disciples, they used to walk up and down in their meditation, just as we were doing today. And it was very lovely, I found, to be there, and lovely to see all the people there doing what they were doing. And then among all those people playing games, doing stuff, just to see people who were on the retreat, just quietly walking back and forth in the midst of all the activity. It's like taking our practice into the world. So I was glad that we were able to do that, to arrange that, and maybe we can do it again. There are monks and nuns whose main practice is in solitude, living in remote places, in caves, and there are people, men and women, who spend their whole life living very quietly, close to nature. And the disciples of the Buddha, they would be doing this not too far from a village or not too far from a place where someone could bring food each day, because the Buddha, he set it up very deliberately so that the monks and nuns couldn't be totally self-sufficient. We can't grow food, we can't store food overnight, and so every day there has to be some kind of contact with kind people who are happy to offer support for us to continue living our lives in this way. And Sister Khemaka and I, we also have opportunities to spend time very, very quietly, staying in a kuti, not having very much contact at all with people, other than to collect food each day. And it's a very precious opportunity. We always greatly value the chance to be away from a lot of human contact, because that gives us a chance to really focus inwardly and to study more closely the ways that we cause suffering for ourselves and each other, of course. To become aware of the fears and the longings
the ideas that we have about who and what we are and what we should be doing and whether we're any good at it or not, and comparing ourselves, separating ourselves. And so to have a chance to be quietly on our own is a very, very precious opportunity. And strangely enough, although we have less contact with people at those times, in some ways we can feel closer to people. And then the rest of our life is in the world to some degree. So in the monasteries in the UK, certainly, they're very open places. People can come and visit any time. People can come and stay and share in our life for a few days at a time. At Amaravati, we have a large retreat center where people can come for retreats, very much like this situation here. And so in our kind of more regular routines, we have a lot of contact with people. And I don't see this at all as a hindrance to our practice, to our meditation. It's something that, in fact, that can really support us in understanding the way that our minds work, our fears and longings and desires, our confusion, and the difficult things that can arise for all of us in consciousness. So our teachers would always encourage us to use whatever situation presented itself as an opportunity for practice, an opportunity for insight, rather than seeing it as an interruption or any kind of obstacle or problem. We began to learn that actually externally there's no obstacle, that the biggest obstacles are our own ideas about things, our own views and opinions, the hindrances that can arise for all of us, the sensual desire, the ill will, the drowsiness, the restlessness, the doubt, these 5 basic obstructions. That these are the things that can hinder us, that can distract us, throw us, pull us off course. In a sense, they have the capacity to delay us on our journey to liberation, unless we're clever. And if we're clever, and if we know what to look out for, then these things aren't problems at all. In fact, I sometimes call them gateways to liberation. I don't know if anybody else would call them that, but that's what I call them. Because when they arise for us in our meditation, they happen for all of us. And on a retreat, we can become very particularly conscious of them. And if we know about them, then we know what we're looking out for. And we know that if we can be mindful, then they can actually lead us to deeper levels of understanding. They can encourage us to reflect and to consider our lives in a deeper way. Maybe it's just that I'm a perpetual optimist, that I see it like that. Or because I'm Scottish, that I like to see that even obstacles can be turned around into something that's to our advantage. Making use of every situation. So I didn't know what I was going to talk about this evening, but it looks as though I'm going to be talking about the hindrances, which wasn't quite what I was expecting, but here we go. So the 5 hindrances. Sensual desire. This particular kind of wanting, this wanting that
the longing for sense pleasures of one kind or another, whether it's food or sex or just a nice holiday in a comfortable place with a big swimming pool, whatever it is, this wanting some kind of pleasure can be very gross, very obvious, and it can also be rather subtle. We can easily confuse this with basic human needs. Sometimes, like in monastic life, people can be really concerned because they feel they've got so much greed, so much sensual desire, because when the mealtime comes, it's all they can do to stop jumping right into the bowl with the food because they're so hungry. Particularly if you haven't eaten for quite a long time. And I'm always grateful to be reminded, but that actually, no, it's not necessarily pure sensual desire. There's probably a very fair element of hunger. You're hungry. When you're hungry, you want to eat. This is a natural human instinct. This is the way that we survive. And none of us would be here if we didn't have this hunger for food or hunger for sex. I mean, that's another element in our being here. You might see it as being a problem or an obstacle or something that's not okay, but it's a very basic human drive, human desire, human longing. So these things are part of human existence, part of our experience, and they're necessary to support us in surviving, and they can obsess the mind in ways that are not helpful. So this is why, and sometimes people are really puzzled and confused by our monastic discipline and training. I remember when I first met the monks, and I was told that you shouldn't shake hands with a monk. They don't have human contact, and if you want to offer them food, they'll put down this little cloth, and you put it on the cloth just in case you might touch them. And I thought, what's this? What's the problem here? What's wrong? What's wrong with me? Am I so, unclean, or is there something wrong with the fact that I'm a woman? And actually, when I pondered this, I realized it wasn't that there was anything wrong, but it was that there was too much that was right. That this attraction, sexual attraction, is just a very, very strong energy. And it's nature. So it's not that there's anything unnatural about it, but it's a very strong energy, and it can cause a real problem, or can be problematic. Like if you, for us, we undertake a vow of celibacy. So there's absolutely no sexual activity whatsoever for nuns and monks. And so when there's no sort of obvious, suitable, appropriate outlet for it, then there can be an enormous sense of frustration, and it can become a very potent energy. And so this is why the Buddha pointed to it as an obstacle, as a hindrance, this sensual desire, whether for sex or for food, whatever, because it can obsess the mind. And we can be sitting in meditation, and that's the only thing we can think about. Have fantasies and all kinds of desires and longings. And it can be triggered just even by very small stimuli, which is why we have that sense of separation, division. So nuns, we don't touch men, simply monks don't touch women, don't have physical contact. And sometimes monks won't even look at us. And you think, what's that? And you realize that actually it's because even the sight, and the Buddha said that there's nothing more potent than contact, or the sight, or the thought, or the memory of some sexual
contact or experience, that these things are very, very strong. So our monastic training and the training during a retreat time is of restraint, deliberately avoiding activities or avoiding contact that can stimulate these kind of desires and longings, because, as we all know, it can be very distracting, very confusing, particularly if we're intent on calming the mind, settling the mind in meditation. It's exciting. I mean, sometimes people laugh at me when I say, well, sometimes, on a retreat, I actually find it much easier to fast than to have food each day. And, my reason is that food is very exciting. When you don't have any other kind of stimulation, then, a delicious meal can be very, very enjoyable when we eat it, but then we think about it afterwards, we remember. So it can be a real distraction in the mind. So the Buddha pointed to this as the very first of what we call the hindrances, and nivarana is the Pali word. So they're hindrances when we get stuck on them, when the mind gets obsessed, and also when we struggle to get rid of them. If we think, oh, I shouldn't have this, there must be something evil or impure about me because I have these fantasies, I have these longings, these desires. But when we're clever, we realize that actually, no, this is just because I'm a human being. I have this body, and this body has natural desires which are part of nature. So we can reflect on it in this way. There are other contemplations that the Buddha also recommended as ways of overcoming this particular hindrance. So just contemplating how fleeting the actual pleasure is. You can only eat a meal once, and then it's gone. You can fantasize for days about having an ice cream, and then how long can you take to eat an ice cream? I mean, maybe 5 minutes if you're really slow and if it's cold. But here, you have to eat it pretty fast, otherwise it's gone. The actual pleasure is very, very short. It doesn't last very long. Then you can also think, well, what happens to the ice cream after I've had it? And you think it goes into my mouth, my tongue sort of does things with it, and it goes down my throat into my stomach, and then it gets mixed up with everything else. And then the rest is completely unthinkable what happens to it. It's not a pretty thought. If we're attracted to another person, then the Buddha recommended, contemplate the 32 parts of the body. Imagine what the person would be like without their skin. Looking at when we become monks and nuns, one of the first contemplations is contemplating the 5 aspects of the body that you see. So hair of the head, hair of the body, nails, teeth, skin. So that's what we're encouraged to contemplate. These things that we, when we're not mindful, we stick them all together, or the mind just creates this thing that is attractive to us. So then, if we take it apart, then what's so attractive about a handful of nails? If you take the nails off, what's so beautiful about them? What's so wonderful about them? Take the skin off. Is it still so attractive? They had an exhibition one time, it's probably still going around the world somewhere, where they managed to plasticize human bodies. I forget what it was called. It was in London. Do you know what it was called? Was it called the Body Exhibition or something? And you could get... It was dead bodies, yes. And they had a way of kind of plasticizing them, and so you could go to this exhibition where they kind of reassembled them. And then there was one particularly striking one, which was of a
a body without the skin. So you could see all the muscles and the nerves and the blood vessels and everything. And this kind of thing was holding the skin. It was like a coat, like a raincoat. Just sort of, and they had fans on because I think they needed fans. And there it was, just this skin just sort of hanging like a plastic raincoat. So this is one of the ways that one of the techniques for dispelling sexual desire, just to contemplate the body kind of dismembered. It can seem a bit gruesome, and I think there can be a resistance to doing this. But when we're given appropriate guidance, it can actually be very calming, can support a sense of calm and quiet, inner quiet. So, and we have to remember the purpose is not to make us see each other as being totally disgusting and repulsive, but just to help to support a sense of inner calm, to balance that energy of desire. So that's why this practice, can be helpful. So these are some reflections on the what's called a hindrance, and I call it the gateway to liberation of sensual desire. When we're clever, we notice what's happening, and we don't allow it to continue because we can see that it's pulling us into a train of thinking and possibly a train of action that is not going to be supportive of our own well-being or the well-being of anybody else. So we learn how to work with it in a skillful way. This is not to say that all sexual activity is wrong, of course, but for monks and nuns, when we're on retreat, this is something that we set aside. The second of the hindrances is ill will. And this too can become an obsession in the mind. If somebody hurts us, upsets us, or does something wrong, we can become totally obsessed with it, wanting to blame them, to punish them, to hurt them in some way. I've talked about this already. Or ill will towards ourselves. And so with this, it can be helpful just to contemplate the harmful aspect of it. All of us have taken the 5 precepts, so we've taken a kind of a vow to not harm any creature. And as monastics, we regularly chant the Buddha's words on loving kindness, which is a kind of a recollection of all creatures and a bringing up the sense of wishing the very best for them, not wanting to cause any harm. And over time, what I've found in my practice is a real sense of concern and care for other creatures, and particularly other human beings, obviously. And as we meditate, we become more attuned to each other, more sensitive, and also more attuned to our own suffering. And I know, so we tend to become more careful. So if there is a thought of ill will or a grudge, as I was saying last night with the farmer and his cows, we try to be careful. We try to attend to it with mindfulness, not to let it get out of hand, not to give it a free hand, but to really practice restraint. So we're not letting it kind of fly out. Sometimes, I'm not one who normally expresses anger in words, outwardly. And people used to say how placid I was. They said, "Oh, she's so placid." I didn't always feel placid inside. And what would happen would be that rather than shouting at someone or having a temper tantrum, because
that wasn't allowed once I got past the age of about 2 or 3. I used to have some good tantrums when I was very little. But, when you grow up, that's not considered very dignified. But I could give people a very mean look. And sometimes, like in the monastery, if someone had upset me, I would give them a very mean look. And then, if for some reason they didn't show up for evening puja or I didn't see them for a few days, I'd then get really worried. I thought, oh dear, maybe I hurt them. Maybe they were upset. Maybe I did them some harm. And if it turned out that actually they had noticed, or I had said something and they had been hurt by that, if I'd said something through not being mindful, expressed, let out the anger, then I would feel quite a lot of regret, remorse. It was almost as though I'd hurt myself, at least as much as hurting them. So when we become aware of ill will in the mind, when we're clever, then we're like the farmer with his cows. We can see that this state has arisen, and we treat it with a sense of care and respect. Sometimes, people do things that are harmful, and we can feel a sense of righteous indignation. This is a very powerful one. In fact, it's interesting that the Buddha's simile for ill will is it's like a disease. And righteous indignation is like a very severe infectious disease, because we feel indignant, we feel outraged, and then we go and tell our friends and they feel outraged, and soon everybody feels outraged about this thing that somebody has done. It's very noticeable sometimes in community. If somebody makes a mistake, it can turn into a really, really big thing, and that's very unfortunate. So the skill is to recognize that there's a big conflagration happening. Sometimes I sit there and it's as though I'm on fire, this big bonfire happening, and I can actually notice that I can feed it or I can starve it. I feed it by thinking more about this thing that somebody has done, elaborating on it, or thinking how I'm going to punish them. I can make it into a huge conflagration if I want to. I can fan the flames, make it really big, or I can starve it. So I can be aware that this fire is happening, and I can just be mindful. I can refuse to feed it. Certainly not to talk about it with others, unless I can find a very good friend who will help me to cool it, to settle it. So we starve a fire by not giving it oxygen, by not putting fuel on it. And the fire, little by little, calms down. So I know that some of you sometimes have felt anger and spoken about the anger, and it can be quite a scary energy. I used to be quite scared of it. Sometimes I used to think that I had enough rage to blow up the whole world. That's how it felt in my early monastic life. I think, oh dear, must be careful with this. But then, as I learnt how to just observe it and allow it to settle, and then it would cool down. It may be that sometimes, something really unfortunate has been done or said, and there may be a need to talk about it with the person concerned. And what I would always encourage is, please wait till the fire has calmed down. Wait till it's cooled down. Don't let your ill will and anger and rage splurge out onto the person. Because, strangely enough, it's totally counterproductive. You hurt the person, you hurt yourself, and all they hear is that you're really angry. Yeah, she's really angry. Better stay away from her. They might hear what you're angry about, so they'd say, okay, I won't do that. I definitely won't do that again. I won't say that again, just because they don't want you to blow up again. But they won't have any understanding of what the real problem is.
Whereas if you can actually allow it to calm down, allow it to settle, then you can consider ways of addressing the issue. This is a very important skill. So the Buddha, fortunately, thank goodness for the Buddha offered some guidelines for offering feedback. And I've always been so grateful for this, because I don't like having to give feedback. However, with these guidelines, usually it works out very well. So what the Buddha said is, make sure you establish a suitable occasion. You know, if you need to talk to somebody about something difficult, don't do it when they're in the middle of doing something else, or when they're upset about something else, or when there's a lot of confusing things happening around about, or when you're going to be interrupted. Try to create a situation where you have space, you have time. So I'm fortunate, most of the time when I stay in monasteries, I have a kuti, I have somewhere that I can invite people to speak privately. If it's a very difficult conversation, I try to make sure that the person is as comfortable as possible. So I give them a comfortable seat, I offer them a cup of tea, we both have a cup of tea, we relax together a little bit, and then, having established a suitable situation, knowing that we both have enough time to have a proper conversation about whatever the issue is, I raise the subject. I speak gently, I don't yell at them, speak gently, politely, respectfully. I speak from a place of kindness, a real intention to support understanding, to support the person in understanding whatever it is that they've been doing that has been making life difficult for me or for other people. I speak of the facts. You know, I make sure that I stick with the facts. I don't make assumptions about what the person might be feeling or wanting, or their motivation or anything else. I just say, well, this is what I saw happening, or this is what I was told has happened. So, setting up a suitable occasion, speaking kindly, speaking from a place of metta, of wishing the best for the person, speaking of what you've actually seen or heard directly, and speaking, offering them information that's going to be useful to them. You're not telling them everything you know about the topic, or saying too much, but just what's going to be useful, what's going to help them to understand the issue. And, you know, different people have different capacity for hearing, for understanding, different interest. And so for some people, they might want to know a lot of technical details about the concern. Other people might just want to know, you know, something very simple. Other people may want to know about how to practice with it from the point of view of Dhamma. So to really consider who it is that you're talking to, and to speak in a way that is respectful and kind and direct and clear. So this is a way of working with ill will. There are other things, but I think I might leave that for another occasion, because we need to talk about sleepiness next. Tina Mida, sleepiness, dullness and sleepiness. And this is a big concern, because when we're asleep, we're not really learning very much Dhamma. We're not really able to observe the mind, to notice the mind. As I said the other day, it's like being just stuck in a airless little prison cell, you know, totally enclosed, not really aware of anything around us. Having said that, you know, it is a concern, but it's important that we actually regard it in rather a light way. I've made the mistake of regarding it as an absolute total personal failing, a catastrophe,
hopeless case. You'll never be any good. You fell asleep again. And so you sort of sit down to meditate again. I mustn't fall asleep, I mustn't fall asleep, I mustn't fall asleep. I must sit up nice and straight. Before we know it, our head's on the floor again. Oh dear, okay. Mustn't fall asleep. And that doesn't help. It really doesn't help. Because we really, we defeat ourselves. I think one of the most helpful things that happened in my journey of sleepiness was when I was actually giving a Christian Buddhist retreat. So I was teaching with a Christian lady, and we were having a question and answer session. There was a big circle of us, and in the group was a Quaker lady, a lovely, very, very lovely, warm-hearted Quaker lady. And I don't know how much you know about the Quakers, but they have a lot of similarities to Buddhist practice, in fact. You know, their main gathering on a Sunday is they sit in a circle, and they sit silently. They just sit quietly. And occasionally, if somebody has a kind of impulse to speak, they'll stand up and say something. But mostly, every Sunday, they just gather and they sit quietly for an hour. So she was very familiar with meditation practice. And it's clear that she was also very familiar with sleepiness. And when this question came up in the general discussion, somebody asked a question about it, and she kind of piped up and said, there's nothing like a little snooze for clearing the mind. And I was so grateful for that sort of sense of lightness, and she was quite right. You know, if you just, maybe you do snooze for a little bit, and then you wake up and your mind is brighter. So, not to make it into a great personal disaster, but more just, we try to maintain wakefulness, but if we have a moment when we just snooze a little bit, then we wake up and we brighten the mind. We find ways to brighten the mind. So it's not a catastrophe, but it does need attention, rather than it becoming a habit of negativity. As I said before, sometimes there's quite a lot of negativity tied in there as well. It's like a kind of closing down. I don't want to be bothered. I don't want to do anything. I don't want to see this. And I think in monastic life that can often be a problem because, monastic life we give up a lot. And there can be a lot of resistance to that, a lot of struggle with that. And one of the ways of dealing with struggle is just to go to sleep. So it can be helpful to take an interest, look into it. What's going on here? Is there some kind of negativity here? Is there some kind of resistance? Is there something I don't want to see? And I've been encouraging you to kind of open your eyes if you feel sleepy. And that's the only kind of sure strategy I've found, actually, that and standing up. And the others can be helpful, putting energy into the posture. There's all kinds of things that, stories of monks in Thailand sort of tying themselves to a tree so that they could keep themselves upright. Or another one, he used to sit with a box of matches in his hands, and he'd have a needle poking up through the box, and so he'd sit like this with his hands like this. And so every time he fell asleep, and his thumbs would slip, and then he'd prick himself on the needle, and so that would wake him up. I tried that; it didn't really work. Oh, that's right, putting the matchbox on your head. Yes, that's another one. Yes, one time. Yes. Yes, to sit with a Tupperware or a matchbox on your head. Yes. Yes. That's another way. But anyway, we have to find our own way. But I would really encourage an attitude of lightness and humor around it. Don't make it into a huge, terrible disaster, catastrophe. Because even if you sleep through every single meditation, you can still develop good qualities in your daily life.
this was one of the things I took solace in. I can still cultivate patience. I can still cultivate generosity. I can still cultivate simplifying my life, renunciation, kindness. These are qualities I can develop, and they're all really important qualities to develop on our path to liberation. So these are ways that we can reflect on the problem of sleepiness. Udachaka kucha, that's a good word for restlessness and agitation. Udachaka kucha. It always feels very restless and agitated to me, which is the fourth hindrance. Restlessness of mind, and I think probably all of us experienced a certain amount of restlessness of mind, maybe during this retreat time, just all these ideas that come in, wonderful ideas, great ideas, brilliant ideas, things that we're going to do to change the world, that kind of busy mind. And I like to contemplate this Udachaka kucha in my daily life as well, because it can be a real problem in daily life. Those people who are always going around sorting things out, trying to fix things, endless restlessness and busyness. Come in. Not able to sit still for 2 minutes. So we're talking about restlessness and agitation. So it can happen internally, this restless mind, always thinking of new ideas, new plans, things to sort out, ways that we can change the world. And it can be particularly distracting in meditation. We think of breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. I wonder what's happening about that. Oh dear. Well, maybe I should talk to so and so about that. And then we can see if we can arrange this. And then we'll have a meeting about it. Yeah, I can offer to take the minutes because I can do good minutes, and we'll make a plan. And we can do this. And then I'll telephone so and so. Yeah, and we can create this whole thing, this whole plan in our mind, as though it's actually happening. And then suddenly you realize, actually, Chandasiri, you're sitting here on your mat in the Dhamma hall here at Dhammarama, and there you were, somewhere else. Come back. Don't let the restless mind pull you into a totally other scenario. Stay here. Stay grounded. So it's interesting that the antidote to this is this staying here, staying grounded. Like the Buddha, he encourages us to focus on something calming, something steadying for the mind. So stay here, calm down, be with the breath. It's interesting, like when we have festival days at Milne Tomb. This is the hermitage where I live in Scotland. And our community is still very small, and sometimes, I'm the only nun there, maybe, or at least I'm the permanent resident. I know of what needs to be done, and there may be one or two other people around who are very willing to help. But I don't know about you, but sometimes I find it more difficult to explain to somebody what to do than to actually do it myself. So if I'm not properly organized, and if I haven't, arranged for 2 or 3 people to give quite specific help, I can end up thinking, well, it's much easier just to do it myself. And I can be running around from one thing to the next thing to the next thing, my mind full of all the things that I have to do. And I'm sure that any of you who've ever had to organize anything will understand completely what I'm saying. And you kind of wonder, it's like a top that's spinning, and you wonder if you're going to take off. There's that kind of energy, that spinning around energy. And so I noticed that when on those occasions, because I'm very interested actually in cultivating and maintaining a sense of inner ease and well-being and balance. And as the
as the abbess, as the senior nun at Milne Tomb, I consider it my duty, actually, as a daughter of the Buddha, to cultivate this sense of inner balance and steadiness. So when we have a festival day, that's the thing that I try to cultivate. So rather than worrying too much if the house isn't absolutely clean, if everything isn't absolutely in its proper place, I try to maintain a sense of inner ease and balance. So the way I do that, sometimes it's talking to myself. Sometimes I say, Chandasiri, it's all right. So if you ever come and stay at Milne Tomb, you might hear me saying, Chandasiri, it's all right. The other thing I like to do is if there's something very simple and practical that doesn't need a lot of thought, it doesn't need a lot of planning, is to do that. Sometimes to sit in meditation when the mind is very stirred up, if there's a lot of things to do and the mind is very active, sometimes just doing something practical, it's like the Buddha, not this Buddha, but many of the Buddhas, they touch the earth. You see them touching the earth. So I see that as like touching the earth. So sometimes people want to do all the practical things. They want to do the washing up. They want to, arrange things. They want to clean things. But for me, I find just, doing a small, simple task can really support a sense of calm, a sense of settling of the mind. So that's a useful thing to keep in mind in your daily life. When you're not on retreat, when you're, just going about your daily life, and if you have a lot of things to do, then just to use the actual practical activities as a way to support inner calm. I remember one time at Amaravati, we were preparing for a festival, and Ajahn Sucitto was the senior monk at the time, and he said, there's an enormous number of things that we need to do. So let's just go very slowly and very mindfully and just do one thing at a time. And that was very helpful advice. And when we do that, the chances are that things actually work out much better than if we're trying to do things very fast, and sort of too much multitasking, can occasionally be useful for short periods of time, but if we make a habit of it, we make mistakes, we trip up, we fall over, we spill things, we make a mess, and it all takes much longer to sort out in the end. And we ourselves are agitated. So as meditators, as disciples of the Buddha, our best offering to the world is a calm, settled, peaceful heart. So really considering ways that we can support and maintain that. And be vigilant. Notice when this uddhacca takes over and we find ourselves running around doing all kinds of things, or in our meditation having all kinds of plans and ideas, exhausting ourselves, being pulled away from present moment awareness. The final hindrance is doubt. And this is a very interesting hindrance. And in fact, I gave each of you a chance to experience that this afternoon. You might not have known that that was what I was doing. But this koan practice, the asking of an unanswerable question, what it does, it tips the mind into the experience of doubt. There's no answer. And what we were doing was recognizing there's no answer, and just staying in that space of not knowing. Sort of deliberately creating a space of not knowing. And I always think that's one of the most valuable, treasured, precious resources that we have. That capacity to stay in the space of not knowing. People ask me about preparing for death, and I say, well, partly I say mindfulness, live mindfully and carefully, but I also make much of this capacity to stay present when we don't know, because the moment of death is the ultimate not knowing. We don't know what's going to happen. We don't know where we're going. We don't know if it's going to be all right or all wrong. All we know is that we don't know. Can we stay calm and steady
in the state of not knowing. I also find it immensely helpful if I have a very difficult decision to make. You know, sometimes in our lives we have to decide things and they feel like very important things and we don't know what to do. Shall I do this? Shall I do that? If I have those kind of decisions to make, I find one of the best, most helpful things to do is to get out on my walking path and to just put my awareness into my feet as I walk up and down. Because what happens otherwise is I go up into my head. I start thinking about it. I think, okay, I think I'll do this. Yes, I'll definitely do this. This is what I'm going to do. Definitely. Yeah, this is a good decision. Do this. On the other hand, maybe I should do that. Yes, I'll do that. And so we go back and forth, don't we? And we just don't get anywhere. We go round and round in circles, thinking. It can sometimes be helpful to make a list of reasons why this is a good idea and the reasons why it's not a good idea. That can support a wise reflection. It can also be helpful if we have a wise friend, somebody that we trust, to talk it over with them. Not that they're going to tell us what we should do, but they might broaden our way of looking at it. They might support us in understanding it in a broader way, helping us to take responsibility for our decision, which is also a helpful thing with doubt and decision-making, learning how to decide something and just do it. And if it's wrong, well, okay, we can learn from that. So we do the best we can, and to try not to be too afraid of making a wrong decision. So these are some reflections on what we call the 5 hindrances and what I call the 5 gateways to liberation. Lust or sensual desire, where we contemplate the momentariness of the pleasure, the fleeting nature of the pleasure, and also consider perhaps that it's not the way it seems, not so desirable as it might seem. Ill will, contemplating the harmfulness of following ill will. Harmfulness towards ourselves, it's like a disease. Harmfulness that we can do towards others. We can hurt others with our anger, with our ill will. Dullness and sleepiness, just considering ways that we can support wakefulness. Restlessness and agitation, finding ways to ground ourselves, to calm and settle the mind. And doubt, finding ways to make peace with not knowing. When we don't, this is a very important aspect of it, which I forgot to mention, that when we don't know up here, like we try to find the answer up here through thinking, but when we can bring ourselves into the space of not knowing, into the present moment of not knowing, that supports us in the refuge in Dhamma. And over time, as our faith in Dhamma grows, we begin to see that the Dhamma is where the answer is. You know, if we can just be fully present with that not knowing, fully present in Dhamma, opening the mind to another dimension, then very often the answer comes. So on my walking path, walk up and down, or when I was sitting here this evening, as I said, I didn't know what I was going to talk about. I wasn't worried about it, but there was definitely a sort of not knowing what I was going to talk about, and then here I am talking about the 5 hindrances. You know, the answer comes if we can just be patient and trust. So these are some reflections that may or may not be useful for you in your lives. I hope they will be useful. If there's anything useful, please pick it up and make use of it. And if there's anything that just doesn't make sense or doesn't seem useful, then you can just gently set it to one side. So I offer this for you to encourage and support you all on your journey to liberation. Page 154.
Handmayang dham kathaya sadhukar dadamase. Sadhu, 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 anumodami. Okay. So what I'd like to do now is for us just to sit quietly for 10 minutes or so, just to allow a kind of settling, a digesting time. A time just to relax and to just notice how you're feeling, notice the any impressions that may be there in the mind, thoughts about what you've heard, and just allow it all to settle. So there's a sense of ease, a sense of peacefulness, a sense of well-being. And if there's any uncertainty about the meditation, you can just use a phrase like just, may I be well. May I be well. Just supporting a sense of inner well-being and ease, peacefulness in the heart. So what I would like to do now is to chant the Buddha's words on loving kindness, which you'll find, where will you find them? On page 36. And this is a kind of spreading of kindness towards all beings, including those born and those to be born. So Medka's little one can also be included in this. This is what should be done by one who is skilled in goodness and who knows the path of peace. Let them be able and upright, straightforward and gentle in speech, humble and not conceited, contented and easily satisfied, unburdened with duties and frugal in their ways, peaceful and calm and wise and skillful, not proud and demanding in nature. Let them not do the slightest thing that the wise would later reprove, wishing in gladness and in safety. May all beings be at ease. Whatever living beings there may be, whether they are weak or strong, omitting none, the great or the mighty, medium, short or small, the seen and the unseen, those living near and far away, those born and to be born, may all beings be at ease. Let none deceive another, or despise any being in any state. Let none through anger or ill will wish harm upon another, even as a mother protects with her life her child, her only child, so with a boundless heart should one cherish all living beings,
radiating kindness over the entire world, spreading upwards to the skies and downwards to the depths, outwards and unbounded, freed from hatred and ill will, whether standing or walking, seated or lying down, free from drowsiness. One should sustain this recollection. This is said to be the sublime abiding. By not holding to fixed views, the pure-hearted one, having clarity of vision, being freed from all sense desires, is not born again into this world. And you'll find the closing homage on page 26. दोपहर के प्रश्न उत्तर के सत्र का अनुवाद कर रहे हैं। पायल ने प्रश्न पूछा था कि कुछ नहीं यानी नथिंग को कैसे जाना जाए, किया जाए, कुछ नहीं को कैसे किया जाए। तो अजान ने प्रत्युत्तर में पूछा कि आपको ये प्रश्न कहाँ से उठा है, क्या क्या कारण है इसके पीछे। तो पायल ने समझाया कि जब वो कुछ नहीं करने का प्रयास करती हैं तो उनके अंदर बड़ा भय जागता है और कुछ नहीं कर पाना उन्हें थोड़ा ये समझ भी नहीं आ रहा है कि ये कुछ नहीं कैसे करना है। तो अजान ने कहा कि हाँ, ये सच है कि जब हम ये बात करते हैं कि कुछ नहीं करना, कुछ होना नहीं है, तो इससे एक भय जागता है या भय जागने का एक अवसर हो सकता है ये। और इसका कारण यह है कि हमारी एक आदत बनी हुई है अपना जो स्वत्व है उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने की या मैं को ये सब कुछ मान लेने की। हमारे अंदर स्वयं हमेशा ये भाव होता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ बन जाऊँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ करने का भाव और कुछ होने का भाव हमारी एक आदतन उसका एक संस्कार हमारे अंदर है। और इसलिए जब हम कुछ नहीं करने की या नहीं होने की बात करते हैं तो भयभीत उससे होना सामान्य हो सकता है। सत्य तो यह है कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम कोई नहीं हैं और वी आर नोबडी। और जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं कि मैं ये व्यक्ति हूँ या ऐसा व्यक्ति हूँ, वो सारे जितनी भी वो बातें हैं वो सब नश्वर ही हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी प्रवृत्तियाँ भी बदलती है, शरीर भी बदलता है, जो व्यक्ति आज है वो कल नहीं भी होता है। तो ये सारी बात जो है ये जब अपने आप पे उतारते हैं तो ये सब बहुत ही भयावह लग सकता है, या इसे औसम भी कहते हैं। आज की संस्कृति में औसम शब्द का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका जो अर्थ होता है वो भय और आश्चर्य का मिला जुला जो भाव है उसको औसम कहते हैं। ये जो नहीं करने का, नहीं होने की जो एक स्थिति है ये धीरे धीरे अपने अंदर भावित होती है। जैसे जैसे हम अपने जीवन के ऊपर मनन करते हैं कि क्या हो रहा है और समझने लगते हैं, यदि हम थोड़ा थोड़ा भी स्वाद चखने लगेंगे कुछ नहीं करने का या नहीं होने का, तो हमें ये बात समझ में आने लगेगी कि ये स्थिति कैसी हो सकती है और फिर उस स्थिति के क्षणों को बढ़ाया जा सकता है। अजान ने प्रोत्साहित करते हुए ये भी कहा कि वास्तव में तो आप इस स्थिति का अनुभव करते हैं या कई बार कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ यह है कि आप इसके बारे में सजग नहीं हैं, आपको जानकारी नहीं है कि ऐसा आपने अनुभव किया है। और हम क्यों इस आदत में, इसकी जो विपरीत आदत है उसमें पड़े हुए हैं कि हमेशा ही कुछ करने का भाव हो, वो इसलिए क्योंकि किसी न किसी रूप में ये एक प्रिय अवस्था है कि हम कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ बदल रहा हूँ, मैं कुछ बदल सकता हूँ। ये जो भाव है इसमें कहीं ना कहीं एक प्रियता का समागम है, हमें ये अच्छा लगता है। ज़ेन ट्रेडिशन में एक प्रैक्टिस होती है क्वान जिसे कहते हैं, जो कि है कोई ऐसा प्रश्न पूछना जिसका कोई बौद्धिक उत्तर या इंटेलेक्चुअल रिस्पांस नहीं हो, बल्कि
वो ऐसा प्रश्न होता है कि जब प्रश्न पूछा जाता है तो जैसे आप एक खाली स्पेस के अंदर चले गए, क्योंकि उसका प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता, तो एक एम्प्टीनेस वहाँ पे बनती है, और जब वो बनती है तो आप उस स्पेस के अंदर रेस्ट कर सकते हैं, या जैसा वो एक क्षण आपको अनुभव हो रहा है उसके अंदर आप थोड़ा सा अपने आप को छोड़ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। तो अजान ने कहा कि आगे वो हमें ये इस प्रकार की प्रैक्टिस करवाएंगी भी। इसमें ये करना होता है कि हम अपनी जो सजगता है, अवेयरनेस है, उसी के अंदर बस सजगता के आभास में ही बने रहें, बजाय इसके कि किसी काम को करने में लग जाएं या किसी सोच विचार में लग जाएं या स्वयं के होने का जो भाव है उसमें उलझ जाएं। तो चित्त की ये जो प्रवृत्ति है बार बार खुद के ऊपर ही टिप्पणी करने की, अपने आप से बात करने की, उसको धीरे धीरे हमें छोड़ देना होता है और उसी में रिलैक्स करना होता है। जब आप इस प्रकार की का अनुभव करेंगी तो आपको ये थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन आप अगर इसे धीमे धीमे करेंगे तो फिर समय के साथ आपको यही जो एक्सरसाइज है कुछ नहीं होने की और एक एम्प्टीनेस में के अनुभव में होने की, वो आपको अच्छी भी लगने लगेगी। लेकिन अजान इस प्रकार की प्रैक्टिस को सबके लिए नहीं कहेंगी कि हर किसी को करनी चाहिए। वो तब आप करें जब आप में इसकी कुछ तैयारी, और वो तैयारी ये है कि हम बुद्ध धर्म और संघ की जो शरण है उसमें थोड़े से स्थापित हों। हमें जो सत्य है और जो सजगता है इसके प्रति हमारा रुझान हो और उसमें हमारी कुछ स्थिरता हो, वरना फिर ये जो अनुभव है कुछ नहीं होने का, ये हमें काफ़ी अनसेटल भी कर सकता है। तो इसी के ऊपर एक दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि जैसे हम कोई व्यक्ति सपने ले रहा है, नींद में जब है तो तब भी कई प्रकार के विचार अपने आप ही आ रहे होते हैं, तो क्या वास्तव में कुछ नहीं कर पाना संभव भी है, या वो क्या उसे संभव बनाने के लिए हमें किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे सांस या संवेदना आदि पर। तो अजान ने कहा कि जो सपनों के अंदर नींद में जब हमें कोई हम बातचीत कर रहे हैं तो कई बार उसके अंदर क्रिया प्रतिक्रिया भी हम करते रहते हैं, तो उसको आप कुछ नहीं की स्थिति नहीं कह सकते। लेकिन ये जो ज़ेन प्रैक्टिस जो करवाई जाएगी उसके अंदर हम कुछ नहीं करने का जो अनुभव है उसका स्वाद चख पाएंगे। यहाँ तक कि भगवान को भी जब निर्वाण का अनुभव हुआ उसके बाद उनकी जो भी वाणी हुई, उनके जो भी कर्म हुए, वो सब एक कुछ नहीं की अवस्था से ही उत्पन्न होते थे। हालांकि उन्होंने बहुत ही उनकी सक्रिय जीवन रहा। तो कुछ नहीं करने का अर्थ ये है कि चित्त के अंदर आप जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उसको अपने चित्त में उसके ऊपर कुछ आरोपण नहीं कर देना, बल्कि जैसी वो क्रिया हो गई बस उसको वहीं पे छोड़ देना। हालांकि हाँ, भगवान बुद्ध ज़रूर उन बातों को याद कर पाते होंगे, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कुछ और आरोपण नहीं किया होगा। इसके बाद हमें डॉक्टर धर ने इसी के ऊपर थोड़ा और आगे समझाया कि हम ऐसा मान लेते हैं कि कुछ नहीं करने का अर्थ है कि अब हमें ये भी एक क्रिया है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो उसमें भी कर्ता भाव है। तो इसके लिए कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं कि जैसे यदि आप प्रयास करें कि आप खुले में बैठे हैं जहाँ पे आवाज़ें हो रही हैं और सोचिए कि अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? करके देखिए तो पता चलेगा कि नहीं, जो आवाज़ें आ रही जा रही है वो तो अपने आप ही सुनाई दे रही है, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ ही नहीं रहा, वो तो अपने आप हो ही रहा है। इसी प्रकार आंखें खुली हैं तो आप कह सकते हैं मैं कुछ देखूंगा नहीं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यदि उसकी जो कंडीशंस है वो मौजूद है, आपकी आंखें भी हैं, दृश्य भी है और रोशनी भी है, ये तीनों अगर वहाँ पर हैं तो देखना अपने आप हो ही जाएगा, उसमें आपके करने नहीं करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो हम जब कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ, वो हमारी ज्ञान अवस्था के कारण हम कहते हैं, क्योंकि ये जो क्रिया है तो स्वतः ही हो रही है। फिर आगे अजान ने जो ये भय वाली बात थी इससे संबंधित, उस पर बताया कि हमारा जो सामान्य तरीका है अपने आप को देखने का, वो स्वकेंद्रित तरीका है। हम सोचते हैं कि आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो अब यदि हम कुछ नहीं रहेंगे और कुछ
नहीं हमें करना, कुछ होना नहीं है, तो ऐसे जैसे कि आपके ज़मीन तले मतलब आपके पैरों के नीचे से जो ज़मीन है वही खिसक गई है, तो एक गिरने का भाव है उसमें, या अनसेटल होने का भाव है, जिसे औसम कहा उन्होंने। तो इसको इस अनुभव को कैसे कोई व्यक्ति अपने अंदर भावित भी करे और उसे बढ़ाए भी, उसके लिए आप अपने चित्त को या मन को, हृदय को और खोलिए, और फिर आप जो धर्म, बुद्ध धर्म संघ की शरण है उसके अंदर अपनी स्थिरता थोड़ी स्थापित करिए। तो जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस, ओपन अवेयरनेस होगी, खुलापन होगा दिमाग के अंदर, तो जब आप कुछ नहीं करने की स्थिति है उसमें एक ठहराव आ पाएगा। और ये कोई ईगो वाली बात नहीं है, इसमें कोई अपना सेल्फ की बात नहीं है इसके अंदर, बल्कि यहाँ पे जो हमारी ईगो है, स्व का भाव है, वो अपना धीरे धीरे उसकी पकड़ जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, जो कि स्वयं के भाव को, अत्ता भाव को अपने आप में इस चीज़ की जो अत्ता है, हमारा अत्ता होने का जो भाव है, वो अपने आप में ही वो उसकी खुद की जड़ें हिलने लगती हैं। और इसलिए जब हमें इस प्रकार का कोई हम अभ्यास करते हैं तो भय उसमें से जागता है। तो जैसे भगवान के लिए कहा जाता है कि वो बार बार उन्होंने कई बार कहा कि मारा मैंने तुम्हें देख लिया है, मैंने तुम्हें देख लिया। इसका अर्थ यही है कि सिर्फ जान लेना कि अभी इस समय भय की स्थिति है, इस समय कुछ करने का भाव है, इस समय कर्ता भाव है, इस समय अत्ता भाव है, ये सब बस ये जान लेना। और जान लेने पर ही, जैसे किसी छवि पर आपने या किसी परछाई पर यदि रोशनी डाल दी जाए तो परछाई अपने आप चली जाती है, उसी प्रकार इन स्थितियों को देख लिया तो वो अपने आप ही विलीन हो जाती हैं। फिर भी यदि आप इस क्रिया के साथ या इस एक्सरसाइज के साथ भय महसूस करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपने थोड़ा इसका अनुभव किया तो फिर आप वापस एक बैलेंस में आने के लिए अपने अत्ता को ही वापस एक बार देख सकते हैं कि हाँ, मैं एक स्त्री हूँ, मेरा नाम पायल है, मैं धर्म के पथ पर हूँ। तो वापस जो स्वयं के साथ जुड़ी हुई चीज़ें उनको आपने एक बार फिर अपने साथ जोड़ा, तो उससे ये हुआ कि आप बहुत ज़्यादा अस्थिर भी नहीं हो गए, और धीरे धीरे आप इस अभ्यास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ नहीं करने का की जो स्थिति है वो और अधिक सुदृढ़ हो जाएगी। अगला प्रश्न था कि जब हम बहुत ही मायूस महसूस कर रहे हों, कंफ्यूज्ड हों, दिमाग में नकारात्मक भाव हों, तो क्या करना चाहिए, परिस्थिति का सामना करें, या हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है उस पर ध्यान दें। तो अजान ने कहा कि अलग अलग समय पे अलग अलग इसके कुशल उपाय हो सकते हैं। कभी कभी तो हम ये मनन कर सकते हैं कि जो इस समय परिस्थिति आई है, कोई एक नकारात्मक की चित्त में उठी है, वो हमेशा तो नहीं थी, पहले तो वो नहीं थी, इसकी जो स्थिति है वो अनित्य ही है। इस समय वो है, लेकिन पहले कुछ समय पूर्व तक नहीं थी, आगे भी नहीं रहने वाली है। या आप कोई ऐसा समय याद करें जब आप इसके विपरीत खुश थे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, एक ऐसा भी समय था जब इसके बिल्कुल विपरीत आप खुशी का भाव था, और अब वो बदल के दुख के भाव में परिवर्तित हो गया है, तो आगे ये भाव भी बदल जाएगा। दूसरा एक मनन हो सकता है कि उस समय शरीर पे क्या असर हो रहा है वो देखें। जब हमारी इस प्रकार कोई लो स्टेट, डिप्रेशन की स्टेट होती है, तो कुछ करने को जी नहीं चाहता, दूसरों से बातचीत करने को जी नहीं चाहता, या करेंगे भी तो ऐसा लगता है कोई बहुत उसमें एफर्ट डालना पड़ रहा है, हम एक अपने आप को दूर कर लेना चाहते हैं, थोड़ा सिक्योर फील करना चाहते हैं। तो आप इन सारी ये जो शरीर पे या भौतिक रूप में जो चीज़ें प्रकट हो रही हैं उन पे उनका निरीक्षण करिए कि क्या हो रहा है, जानिए कि क्या हो रहा है। एक और तरीका ये हो सकता है कि आप कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करिए, कोई छोटे मोटे काम कर सकते हैं आसपास की, आपकी जो कमरा है उसमें थोड़ी सफाई करें, या फिर किसी दूसरे के लिए कोई भलाई का काम करें। तो उससे जो अपने अंदर उतर जाने की जो टेंडेंसी है डिप्रेशन में, उससे थोड़ा सा बाहर आने का आपको मौका मिलेगा। ये एक नहीं तो ये जो भगवान उपमा देते हैं दुधारी एरो की या डबल एरो की,
एक के ऊपर एक बाण चलाने वाली, तो हम वो ना करें कि नकारात्मक स्थिति यदि जागी है तो अब उसके अंदर और ये भाव डाल देना, ये कब तक रहेगी, ये मुझे क्यों हो रहा है, ये चला क्यों नहीं जाता आदि। तो इसके ऊपर ये दूसरा जो जहर है ये नहीं उस पर उड़ेल लें। फिर आगे इन्होंने इसी प्रश्न को आगे और इन्होंने पूछा कि तो क्या मैं अपनी जो साधना है, ध्यान का अभ्यास है, उसको छोड़ दूं, और यदि वो कर रहा हूं तो क्या ये सब करने से इस परिस्थिति में वो और बढ़ नहीं जाएगा। तो अजान ने कहा कि ऐसे में आपको कोई बहुत ही एक्टिव मेडिटेशन, उन्होंने कहा क्रियात्मक प्रकार का ध्यान, यानी कि जिसमें आप कोई किसी खाली आंखें बंद करके किसी एक बिंदु पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि थोड़ा खुले रूप में ध्यान, जैसे कि वॉकिंग मेडिटेशन भी हो सकता है, जिससे आप अपने चित्त को थोड़ा शांत कर सकते हैं, प्रकृति में जा सकते हैं और इस प्रकार अपने मन को वापस स्थिरता या बैलेंस में ला सकते हैं। कभी कभी इसके लिए ये अभ्यास भी किया जा सकता है कि जो नकारात्मक विचार यदि चल रहे हों तो उनको कुछ सकारात्मक या सहायक विचारों से रिप्लेस कर दें। तो जैसे अजान ने बताया कि वो किसी एक रिट्रीट में काफ़ी मतलब थोड़ी जो समय था उससे अधिक वो सो गई थी, तो अचानक उठते ही फिर बहुत सारे विचार एक के ऊपर एक उनके अंदर चलने लगे कि तुम अच्छी नहीं हो, ये तुम क्या कर रही हो, तुम हमेशा गलत काम करती हो आदि। तो उन्होंने अपने आप को इसके इस प्रकार के जो नकारात्मक विचार थे उसके ऊपर एक सकारात्मक सोच उस समय डाली कि चंद्रसिरी, जो भी तुम इस रिट्रीट पे कर रही हो वो एक सही अभ्यास है, वो सही है। और इस विचार को उन्होंने बार बार अपने अंदर दोहराया, तो धीरे धीरे उनका जो मन है वो वापस स्थिर होने लग गया। तो उन्होंने कहा कि चाहे ये विचार हो, चाहे या कोई दूसरा नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, विचार जो है वो है तो एक इल्यूजन ही, वो माया ही है, वो उसका कोई उसके अंदर अपने आप में कोई एसेंस नहीं है। तो इसलिए यदि आप नकारात्मक हैं उससे तो अच्छा ये है कि आप कोई पॉजिटिव थिंकिंग ही कर लें। अजान सुमेधो भी इस प्रकार का एक प्रयोग किया करते थे कि उन अपने जो विचार थे उनको वो लिख लिया करते थे। तो उससे ये होता था कि विचारों का किस प्रकार की प्रकृति है वो आंखों के सामने उतर के कागज़ पे आ जाती है, तो फिर उसको ठीक से उसके ऊपर मनन किया जा सकता है या समझा जा सकता है। अगला प्रश्न ये था कि क्या प्रकृति में, जैसे हम वॉक वगैरह करने जाएं, वॉकिंग मेडिटेशन हमने किया, तो प्रकृति में होना, क्या हम अपने जो इंद्रियां हैं उनको वहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे सुंदर दृश्य हैं या आवाज़ें हैं, तो क्या हमें वो करना चाहिए या ध्यान करना चाहिए। तो अजान ने कहा कि हाँ, आप अपने इंद्रियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, और आप जैसे कि क्या देख रहे हैं तो उसके ऊपर भी उसको भी इस्तेमाल करते हुए आप अपनी साधना कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो सिर्फ एक थोड़े से विस्तृत तरीके से सिर्फ जो प्रकृति में होने के भाव को ही आप एंजॉय कर सकते हैं, और ये भी हमारी साधना का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न जो था वो था स्वयं को मेत्ता देने के ऊपर, कि इससे जो है अत्ता भाव जो है वो कम हो जाता है। तो इस पे थोड़े रिफ्लेक्शंस और डिस्कशन हुआ था। अजान ने कहा कि उन्हें कई वर्षों तक वो स्वयं को ही आलोचनात्मक काफ़ी रहती थी, और उन्होंने ये देखा कि बहुत साधना के अंदर एफर्ट डालने से काम नहीं बन रहा था। कई बार हम भगवान की टीचिंग्स को ऐसे लेते हैं कि हाँ, बहुत समाधि का अभ्यास करना है, बहुत मेडिटेशन करना है इत्यादि, लेकिन उसमें उन्होंने देखा कि यहाँ पे सफलता नहीं मिल रही है। तो उन्होंने इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया कि भगवान जो है उन्होंने अपने बहुत ही करुण भाव से हमें एक ऐसी शिक्षा दी जिससे कि हम दुख मुक्ति तक पहुँचे, और उनका आशय ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमारे ऊपर कोई एक और वज़न, एक और कोई एक बर्डन डाल दिया जाए कि अब ये काम भी, एक नया काम आपको करना है, साधना करनी है। तो हम लोग अक्सर साधना को लेके बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ अपने मन में बातें बना लेते हैं। सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि हमारे अंदर खुद के लिए ही एक सम्मान का भाव हो और खुद की भलाई का भाव हो,
और ये करने के बाद ही हम अपनी साधना को या समाधि या उसके आगे के जो अंग हैं, जो भी अंग है साधना के मार्ग पे, उनको हम अधिक पुष्ट कर सकते हैं। हमारी सोच ऐसी हो गई है कि पहले हमें समाधि, फिर प्रज्ञा और उसके बाद फिर मैत्री का अभ्यास करना है। उन्होंने कहा इसका बिल्कुल उल्टा है। पहले आप स्वयं के प्रति जब मैत्री रखेंगे, चित्त थोड़ा शांत होगा, स्थिर होगा, उसके बाद ही वो कहीं पे समाहित हो सकता है और उसके साथ ही फिर प्रज्ञा भावित हो सकती है। कभी कभी हम स्वयं के प्रति जो हम अच्छा भाव नहीं रखते, उसका कारण ये भी होता है कि हमें ऐसे लगता है हम अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं। तो हम इसी के ऊपर एक बहुत बड़ा अहंकार ही, ये भी एक अहंकार का ही स्वरूप है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत अहंकार नहीं करता। तो ये सब, लेकिन ये सारी बातें होते हुए भी हमें समझना चाहिए कि हमारे मानव होने का एक अंग है और इसके ऊपर अब हम वापस दोबारा अपने आप को दोष ना देने लगें, बल्कि बहुत ही मैत्री भाव से, करुणा भाव से हम अपने इन सारे मनोभावों को देखें और उनको स्वीकार करें कि हाँ, ये जो स्थिति है मेरे अंदर या चित्तवृत्तियाँ हैं, ये मेरे मनुष्य होने का ही एक अंग है। तो हम इन सबको अपने अंदर स्वीकार करें। लोक विदु बनने वाली जो बात है कि जो भी हमारे लोक में उत्पन्न हो रहा है, अपने चित्त में उत्पन्न हो रहा है, रूप और मन में उत्पन्न हो रहा है, उसका हम भान हो कि हो क्या रहा है और उसका स्वीकार करना। और अजान ने माना कि हाँ, ये आसान नहीं है, लेकिन समय लगता है, लेकिन संभव ज़रूर है। फिर जो प्रश्न था वो ये था कि ये जो अत्ता है, ये कहाँ से ये उत्पन्न होता है? क्या हम पूर्व जन्मों से इसको लेके आ रहे हैं? तो अजान ने कहा कि उनकी समझ में जब मृत्यु का क्षण है, तो उस समय तक यदि हमने पूरी तरीके से अत्ता की प्रकृति को नहीं समझा है और सत्य को नहीं समझा है, अनित्य दुख अनात्ता का जो सत्य है उसको नहीं समझा है, तो और हमारे अंदर किसी भी प्रकार की ये तृष्णा है कुछ बनने की या किसी अनुभव को प्राप्त करने की, किसी भी प्रकार की कंटिन्यूटी की या बिकमिंग की, तो फिर वो जो तृष्णा है, वो जो चाह है, वो हमें एक दूसरा जन्म दे ही देती है। तो ये जो समबडीनेस, यानी कि कुछ हो जाने का भाव, कुछ बन जाने का भाव, वो हमें हमारे अगले जन्म का कारण बनता है। तो हम अपने अंदर एक अलग प्रकार की इच्छा जागृत करें, और वो है कि इस बार बार होने की जो चाह है, उस चाह को ख़त्म करने का हम प्रयास करें। और वो तभी होगा जब हम समझेंगे कि ये जो अत्ता है वो क्या है। जब उसको समझेंगे तो अपने आप ही अनत्ता को समझ पाएंगे। तो जो निबिदा है, यानी कि रेलिंक्विश करने का जो स्थिति होती है, वो प्रज्ञा से ही जागृत होती है। जब हमें जो संस्कृत चीज़ें हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आती है, तभी उनके प्रति निबिदा का भाव या उनको निष्क्रमण का भाव उत्पन्न होता है। निबिदा इज डिसेंचेंटमेंट। ओके। अगला प्रश्न ये था कि तो फिर मैं कब मैं समझूं कि मैं तैयार हो जाऊंगा अपने आप का अंत देखने के लिए, अब आगे कोई भाव नहीं होगा कुछ और बनने के लिए। क्या यदि मुझे एक ऐसा अवसर मिलता जीवन में, कोई ऐसा क्षण कि जब मैं जो चिर अवस्था है, चिर शांति जो है, उसका अनुभव कर पाता, तो फिर आसान होता, बाकी सब चीज़ें जो है वो स्वतः ही छूट जाती। ऐसा एक प्रश्न या विचार आगे रखा गया था। तो अजान ने कहा कि ये तभी होगा जब आप जो दुख है क्षण प्रति क्षण पे जो अनुभव हैं, उनको जब देखेंगे और उसके साथ जो जुड़ाव है, चिपकाव है, वो छूटेगा। जिस चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं या उनके प्रति आसक्ति है, वो जब जैसे जैसे समझ भावित होगी, तो वो आसक्तियाँ अपने आप ही टूटेंगी। और जब हम दुख को समझने लगते हैं और
उपादान को समझने लगते हैं, ग्रास्पिंग को समझने लगते हैं, तो फिर अपने आप ही ये समझ आने लगती है। और कभी कभी आपको क्षणिक ऐसे अनुभव हो सकते हैं शांति के, लेटिंग होके, जब आप लेटिंग चीज़ों को छोड़ देंगे, पकड़ ढीली कर देते हैं, तो पल दो पल का जो एक अनुभव है शांति का, वो आपको एक झलक देता है उस परम अवस्था की। तो ये एक साधारण सी शांति है, इसमें हम कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत रोशनी आसपास जाग जाएगी आदि, हम इसे कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेज नहीं इसकी रखे, बल्कि एक जो साधारण कॉमन अनुभव है उसी पे उसको जाने, और जाने की इन्हीं अनुभवों के आधार पर ही हम अपने जो चाह है बार बार कुछ होने की, उसको त्याग पाएंगे। इसके बाद अब आज शाम के जो प्रवचन थे उसके ऊपर उसका ट्रांसलेशन है। तो अजान ने हमें ध्यान दिलाया कि एक और दिन जो हमारी साधना का शिविर का है, हम उस दिन के अंत तक पहुँचे हैं, और हम एक ऐसे शहर के अंदर हैं जहाँ, या ऐसे वातावरण में हैं जहाँ पे मशीनों की आवाज़ें हैं, ऐसी मशीनें जो हमारे कंफर्ट के लिए ही हैं, चाहे हीटर चल रहा है, एसी है, जो भी है, मेट्रो की आवाज़ आ रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो इस प्रकार की अनेक आवाज़ें हैं। और आज हमने पार्क के अंदर भी जब हम गए थे वॉकिंग मेडिटेशन के लिए, तो इस प्रकार का एक वातावरण था जहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। लेकिन हम ये भी एक तरीका इस चीज़ को ही देखने का ये भी है कि भगवान बुद्ध और उनके जो उस समय के शिक्षक रहे होंगे या भिक्षु रहे होंगे, वो भी ऐसे ही किसी पार्क में, ऐसे ही किसी स्थान पे जाते होंगे और वहाँ पे जाके चक्रमण करते होंगे। तो ये हमें एक ऐसा अनुभव मिला, हम वही अनुभव हमने लिया जो कि भगवान ने भी लिया होगा। और साथ में स्वयं के लिए देखा जाए तो जहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही हो, एक ऐसे स्थान पे हमने अपने आप को शांत करने का एक अनुभव लिया जो हमारी दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई ऐसे भिक्षु भिक्षुणी होते हैं जिनकी जो मेन प्रैक्टिस होती है वो किसी निर्जन स्थान पे जाके और या प्रकृति में जाके साधना करने की होती है। लेकिन जो भगवान ने अपने जो उनके डिसाइपल्स थे उनको ये सिखाया कि वो ऐसे गाँव में रहें या ऐसी जगहों पे रहे जहाँ पे गाँव आसपास हो, तो उनका जो रोज़ का एक दूसरे जो गृहस्थ लोग हैं उनके साथ एक संपर्क रोज़ का बना रहता था, क्योंकि भोजन दान के लिए, पिंड पात के लिए उन्हें वहाँ पे जाना होता था। तो अजान ने कहा कि उनको भी ऐसा समय मिलता है जब वो अपनी कुटी में कई समय तक, लंबे समय तक शांत हैं और अकेले हैं, लेकिन समय समय पर वो पिंड पात के लिए जाती हैं तो उनका लोगों के साथ और संपर्क होता ही है। और इससे उन्हें दोनों तरीके के अनुभव होते हैं, जो कि है कि अपने आप को आंतरिक फोकस भी कर पाएँ और फिर बाहर के जो लोग हैं उनको भी देख पाएँ, उनसे मिल पाएँ, स्वयं की जो दुख हैं और दूसरों के दुख हैं उनको समझ पाएँ। तो और एक अजीब सी बात ये भी है कि जब हमारा दुनिया के साथ कम संपर्क होता है तो बल्कि हम और लोगों के साथ अपने आप को अधिक निकट महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रज्ञा है वो पुष्ट होने लगती है और मन में मैत्री का भाव जागने लगता है। इसके विपरीत जहाँ इंग्लैंड में कुछ मॉनेस्ट्रीज़ है, वहाँ पे काफ़ी एक्टिव मॉनेस्ट्रीज़ है, वहाँ काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, बड़ी रिट्रीट्स होती हैं। तो अजान ने कहा कि इस प्रकार बहुत अधिक संपर्क होने को वो किसी बाधा के रूप में नहीं देखती हैं, निवरण के रूप में नहीं देखती अपनी साधना के लिए, बल्कि उन्हें लगता है कि इससे ये उनकी साधना के लिए एक सहायक स्थिति है, क्योंकि दूसरों के संपर्क में आने से हमारे जो भय हैं, हमारी जो कई कामनाएं हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, जो मुश्किलें हैं, वो सब उठ के आती हैं उन परिस्थितियों के अंदर, तो हमें अवसर मिलता है उनको देखने का और उनके पार जाने का। तो इनके ट्रेडिशन में जो टीचर्स हैं वो यही सिखाते हैं कि आप हर ही अवसर को, हर ही स्थिति को, परिस्थिति को अपनी साधना के लिए प्रयोग करें, बल्कि और उसको बाधा ना समझें,
क्योंकि सच तो यह है कि कोई बाहरी परिस्थिति हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर ही नहीं सकती। जितनी भी बाधाएं हैं वो हमारे भीतर ही हैं। और यहाँ से और इन बाधाओं को अजान गेटवेज टू लिबरेशन यानी कि मुक्ति पथ का द्वार कहती हैं कि इनसे इन बाधाओं से हमें ये अवसर मिलता है कि हम अपने जो अंदर की जो स्थिति है उसको देख पाएं और फिर उसके पार जा पाएं। तो जो 5 निवरण हैं उन्होंने फिर एक एक निवरण का हमें को समझाया। पहला है कामछंद यानी सेंशुअल प्लेजर्स। तो वो कई प्रकार के होते हैं। भोजन की कामना, सेक्स की कामना, किसी हॉलीडे पे जाना है, घूमने जाना है, उसकी कामना। तो ये ग्रॉस हो सकती है यानी कि सूक्ष्म या स्थूल प्रकार की अलग अलग हमारी कामनाएं होती हैं जो हमें प्रिय लगता है, हम उन चीज़ों के प्रति हमारा रुझान होता है। तो हम इन चीज़ों को लेके जब हम कामछंद की बात करते हैं और साधना करें तो कभी कभी हम कंफ्यूज कर लेते हैं इसे जो हमारी स्वाभाविक और सामान्य मनुष्य की कोई जो आवश्यकताएं हैं, बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, उसके साथ हम कंफ्यूज कर लेते हैं। जैसे मोनास्ट्री के एनवायरनमेंट में देखें तो लोग शाम को भोजन नहीं करते, तो ऐसा स्वाभाविक है कि उन्हें भूख लग जाएगी या लगती है। तो आपको ऐसे लगेगा कि वो भोजन की तरफ, जैसे अगली बार जब भोजन मिलेगा तो कभी कभी बड़ा उतावलापन होता है। तो इसे आप पूरी तरह से कामना से प्रेरित एक्शन नहीं कह सकते, बल्कि ये एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। स्वाभाविक मनुष्य का स्वभाव है ये कि जब उसे भूख लगेगी तो वो भोजन की तरफ वो उसका रुझान होगा ही। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इन बातों से, लेकिन इसका उल्टा ये है कि जो चीज़ें हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, हम उन्हीं को लेके कई बार अपने उनसे ही चिपकाव पैदा कर लेते हैं। तो वो एक हमारी समझने की बात है। इसके बाद जो उन्होंने काफ़ी समय स्त्री पुरुष की जो संबंध है और मोनास्ट्री में उसके लेके जो कुछ प्रोटोकॉल है या रूल्स हैं उसके बारे में जैसे समझाया कि वो नन है तो जब वो नई थी तो देखती थी कि उनसे कहा जाता था कि किसी जो मंक्स हैं, भिक्षु हैं, उनके साथ हाथ नहीं मिला सकते, किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक संपर्क नहीं हो सकता। यदि आपको भोजन दान भी देना है तो हाथ में नहीं देके उनके कपड़े पे रखेंगे। तो उन्हें लगता था कि ये सब क्या है, बड़ा अजीब सा लगता था और उन्हें लगता था क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मुझ में कोई कमी है, गलती है। अब जब वो देखती हैं तो लगता है अरे ये तो सब सही ही था, क्योंकि ये हमारे मार्ग पे जिस पथ पे हम चल रहे हैं उसके लिए ये एक सहायक कुछ रूल्स बनाए गए हैं। क्योंकि इसका कारण ये है कि जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो बहुत ही, उसकी जो एनर्जी है काफ़ी तीव्र होती है। तो आप कभी भी उसके बहाव में बह सकते हैं और ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है आपकी साधना के लिए। कुछ लोग जो लोग भिक्षु या भिक्षुणी होते हैं वो तो ब्रह्मचर्य का व्रत लेते ही हैं। तो उन्हें क्योंकि अपनी शारीरिक कामनाओं को पूर्ण करने का कोई तरीका नहीं मिलता है, तो इसलिए उनके अंदर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, कई प्रकार के मनोभाव उत्पन्न हो सकते हैं और उसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी प्रबल हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि साधना करते समय ऐसी बात को लेके कोई विचार उठने लगें और मन जो है हमारा वो फैंटेसी के अंदर लग जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भिक्षु हैं और भिक्षुणियाँ हैं उनको अलग अलग उनका स्थान रखा जाता है, अलग बैठने का, अलग रहने का आदि। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भिक्षु होते हैं जो भिक्षुणियों की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। तो देखने में, ये सुनने में या देखने में ये बात बड़ी कड़ी लग सकती है, लेकिन भगवान ने ऐसा कहा है कि ऐसे सूत्र में कहा गया है कि किसी स्त्री की, या इसी तरह आप कह सकते हैं किसी पुरुष की जो को देखना या सुनना या उनका किसी भी प्रकार से उनका संपर्क में आना आपकी साधना को भंग करने के लिए एक बहुत ही प्रबल कारण बन सकता है। तो इसलिए अपना बचाव करना आवश्यक हो जाता है। जो मोनास्टिक ट्रेनिंग है या जो भिक्षु जीवन है वो संयम का जीवन है और इसलिए
जो भी चीज़ें उस संयम के बाहर आपको फेंक सकती हैं उनसे आपको बचना ही होगा। ये इनकी ट्रेनिंग का पार्ट हिस्सा ही है। जैसे इसका दूसरा जो एक पक्ष है, जैसे भोजन को लेके फिर से बात करें तो अजान ने बताया कि वो खुद जब रिट्रीट्स पे होती है तो उन्हें लगता है कि वो कई बार ज़्यादा खाने से तो अच्छा है कि थोड़ा व्रत कर लिया जाए, कम ही खा लिया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि और तो कोई इंद्रियों को एंगेज करने की कोई और साधन नहीं है। तो भोजन की जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा अपने चित्त के अंदर बढ़ सकता है और व्यक्ति उसको लेके काफ़ी अपना ध्यान लगा सकता है, बार बार भोजन का विचार करे या उसको लेके प्रपंच में पड़ा रहे। तो इसलिए वो सोचती हैं कि कभी कभी तो कि वो फास्ट ही कर लेती हैं। लेकिन ये सब कहने के बाद उन्होंने फिर हमारा ध्यान एक प्रज्ञापूर्ण जो इसका पक्ष है उसकी तरफ दिलाया कि ये सब हमारे मनुष्य होने का, हमारे अस्तित्व का ही एक अंग है। तो इसको लेके हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि समझना है कि हम कैसे इन सारी मनुष्य होने की ये जो स्थितियां हैं इसके कैसे पार जा सकें और ये हमारी साधना में बाधा ना बने। और उसके लिए कुछ सहायक मनन जो करने का हो सकता है, धर्म विचय जो कर सकते हैं वो इस प्रकार है कि जैसे मानिए कोई आइसक्रीम खाने का विचार आया और कई दिनों से वो विचार मन में चल रहा है, तो आप देखेंगे कि विचार तो कई दिनों से मन में चल रहा है, लेकिन जब आप वास्तव में वो आइसक्रीम सामने प्रकट हुई और खाई तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आप उसे खा लेंगे। तो कितनी देर तक वो स्वाद हमारे साथ रहा या उसका स्वाद ले पाए। तो और फिर दूसरे प्रकार का विचार ये हो सकता है कि अभी आइसक्रीम खाने के बाद इसका क्या हुआ, शरीर में जाने के बाद ये मुंह से ज़बान पे लगा, मुंह से निकला, पेट के अंदर गया और उसके बाद उसका क्या हुआ। तो ये सब जब आप देखेंगे तो अपने आप ही उससे जो चिपकाव है वो छूट जाएगा। इसके अलावा फिर अशुभ भावना की जाती है, जो 32 शरीर के अंग हैं उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन किया जाता है। और जब शुरू में प्रवज्जा ली जाती है, भिक्षु भिक्षुणी बनते हैं, तो उन्हें जो 5 शरीर के अंग हैं, केश, लोम, नख, दंत और त्वचा, इस पे कॉन्टेम्पलेशन वो लोग करते हैं। तो उन्होंने जैसे एक बॉडी एग्जीबिशन में गई थी तो वहाँ पे प्लास्टिक के बॉडी पार्ट्स बनाए हुए थे और उन्होंने ये भी देखा कि जो चमड़ी है, शरीर की जो स्किन है, उसको प्लास्टिक रेनकोट की तरह। तो ऐसे इस प्रकार की जब हम अपने शरीर को इस प्रकार से देख पाएँ तो अपने आप ही ये एक संवेग जागता है कि उसके प्रति एक उसका शरीर का जो सत्य है वो सामने प्रकट होता है और उसका जो सुंदर होने का जो एक मोह है हमारे अंदर वो छूटता है। फिर दूसरा जो निवरण है वो है व्यापाद या इलविल। तो उस पर अजान ने पहले भी काफ़ी बात करी थी कि ऐसे भाव आना कि किसी दूसरे का नुकसान हो जाए और उनको कोई तकलीफ़ हो जाए, उनका कुछ बुरा हो जाए, या फिर हम ये जो इस प्रकार के विचार हैं वो स्वयं के प्रति भी रख सकते हैं। तो जो पंचशील जब हम लेते हैं तो वो हमें इस व्यापाद का जो निवरण है उससे बाहर निकलने में सहायक है। जब हम साधना करते हैं तो धीरे धीरे हम एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील होने लगते हैं, क्योंकि हमें जब अपना दुख समझ में आने लगता है तो दूसरों का भी समझ में आने लगता है। यदि दूसरे किसी के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भाव है तो फिर हम उसे बहुत ही सजगता के साथ उसको देखें और फिर वहाँ पे हम उसके लिए एक प्रैक्टिकल जो उन्होंने तरीका बताया वो है कि वहाँ पे संयम का बर्ताव करें। जैसे कल उन्होंने बताया था कि कोई किसान जिसके गायें हैं तो उसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है कि वो गायें चर ना जाए किसी ताज़ी फसल को। उन्होंने अपने कुछ उदाहरण दिए कि जब उन्हें बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है तो, या जब शुरू में जब वो कई वर्ष पहले जब वो नन बनी थी तो गुस्सा वो अपने प्रकट स्वरूप में तो नहीं लाती थी, यानी कि किसी को कुछ बुरा कहती नहीं थी गुस्से के कारण, लेकिन देखने की नज़र बहुत तीखी हो जाती थी। तो और फिर जब ऐसा होता था कि किसी को गुस्से में बहुत तीखी नज़र से उन्होंने देखा और फिर वो व्यक्ति उनसे नज़र बचाने लगा, कई दिन तक दिखा नहीं, तो फिर धीरे धीरे उनके मन में अब वो गुस्से की जगह चिंता उत्पन्न होने लगती थी कि कहीं मैंने इसको हर्ट तो नहीं कर दिया है, दुखी तो नहीं कर दिया है। और फिर वो भाव धीरे धीरे बदलते बदलते
इस भाव में परिवर्तित हो जाता था कि अरे मुझसे गलती हो गई है। तो अब इन्होंने ये देखा, ये सारी क्रिया में उन्होंने ये देखा कि गुस्से से वास्तव में देखा जाए तो वो अपने आप को ही और अधिक दुखी बना रही हैं। तो इस प्रकार का एक कॉन्टेम्पलेशन हम भी कर सकते हैं। और इसमें कई बार एक चीज़ जो बहुत प्रबल हो जाती है वो है राइचियस इंडिग्नेशन, यानी कि नैतिकता को लेके रोष। ये समझना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है और उसके अनुसार ही दूसरों को होना चाहिए, और उसको लेके हम अपनी जो अपना व्यापाद है या जो दूसरों के प्रति नेगेटिविटी है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। इसको भगवान ने एक इन्फेक्शियस डिजीज़, सीवियर इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब एक भारी इन्फेक्शियस छूत की बीमारी जैसे कहा है, क्योंकि जब ये इस तरह का रोष हमारे अंदर होता है तो हम इसे दूसरों तक भी फैला देते हैं। जबकि जो सिर्फ एक व्यापाद है या दुर्भाव है उसको मात्र एक रोग का है, जबकि राइचियस इंडिग्नेशन को छुआछूत की बीमारी एक बहुत बड़ी बीमारी का है। तो अच्छा, संक्रामक रोग जो भी, हाँ। तो अजान ने कहा कि आप जो ये दुर्भाव है इसको एक जलती हुई आग के भांति भी मान सकते हैं कि या तो हम उस आग के अंदर और ईंधन डालें और बुरा सोच के और उसमें उस आग को बढ़ाते चले जाएं, या उस आग को सूखने दें, यानी उसमें और ईंधन नहीं डालें। आप उसके अंदर अब जो दुर्भाव थे उसको लेके और विचार नहीं करें, किसी दूसरे से उसके बारे में बात नहीं करें, और बात करनी भी हो तो किसी ऐसे कल्याण मित्र से बात करें जो उसकी जो आग है या धधक है उसको शांत होने में आपकी सहायता करे। वो कुछ ऐसी बात कहे जिससे आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसको थोड़ा और उसके ऊपर उठ के देख पाएं कि वास्तविकता क्या है। भगवान बुद्ध ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि यदि हमें किसी दूसरे को ये बताना हो कि हमें किसी से किसी प्रकार की तकलीफ़ परेशानी हो रही है और हमें उन्हें इस बात की सूचना देनी हो, तो सूचना देने के लिए क्या उत्तम तरीका है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि समय का ध्यान होना, अवसर का ध्यान होना, स्थान का ध्यान होना, ये देखना कि आप या वो व्यक्ति कोई और कामकाज में तो उलझे हुए नहीं हैं, वहाँ पे कोई इंटरप्शन तो नहीं है, आपके पास भी अनुकूल समय हो, यानी परिस्थिति पूरी, समय और परिस्थिति दोनों बिल्कुल अनुकूल हों, तभी ठंडे दिमाग से शांत होके उस व्यक्ति से आप बात करें। और उस समय चित्त के अंदर आपका जो मनोभाव है वो मैत्री से परिपूर्ण हो, और भाव यही हो कि ये जो वार्तालाप मैं करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, उससे एक समझ आए, वो व्यक्ति भी परिस्थिति को समझ पाए, मैं भी समझ पाऊँ, और बात जो है वो स्पष्ट हो जाए। तो बात करते समय जो भी आपने वास्तव में देखा या सुना उसके आधार पर बात करें, और हमने जो अपने विचार उसके बारे में बना लिए हैं, अजम्पशंस बना लिए हैं, उसके आधार पर नहीं। अगला जो निवरण है वो है थिन मिद, यानी डलनेस एंड स्लीपीनेस। तो इसमें अजान ने कहा कि एक वाकया बताया कि जब वो एक क्रिश्चियन बुद्धिस्ट रिट्रीट ले रही थी तो वहाँ पे क्वेकर महिला, जो शायद कोई एक संप्रदाय होता होगा जो बुद्धिज़्म की जैसे ही है, तो ये लोग संडेज़ को ऐसे साथ बैठकर शांत होके साधना करते हैं, और यदि कोई व्यक्ति कुछ बोलना चाहे तो खड़े होके अपना विचार व्यक्त करता है। तो वो व्यक्ति को, इस स्त्री को जो इन्हें मिली इस रिट्रीट के अंदर, वो मेडिटेशन और जो स्लीपीनेस है दोनों को ही समझ पाती थी। तो उस स्त्री ने बड़े ही एक हल्के मन से ये बात कही, जब बात हो रही थी कि बहुत नींद आती है, तो उन्होंने कहा कि यदि बहुत नींद आ रही हो तो सबसे अच्छा उपाय तो उस समय ये है कि आप एक छोटी सी झपकी मार ही लें, तो उससे फिर आपका जो उसके बाद आपका जो चित्त है, माइंड है, वो थोड़ा ब्राइटन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यदि बहुत नींद आ रही है तो थोड़ा सा सो लेना ठीक है, बजाय इसके कि हम इसके ऊपर और आरोपण करें कि मुझे क्यों नींद आ रही है, नहीं आनी चाहिए, मैं बुरी हूँ आदि। और फिर अजान ने और उपाय हमें कल बताए ही थे कि आंखें खोल लें, खड़े हो जाएं, और इस प्रकार से कुछ
कुछ थोड़े से एक्सट्रीम उपाय भी किए जाते हैं। कोई व्यक्ति अपने आप को पेड़ से बांध लेते हैं, या कोई माचिस के डब्बे को सिर पे रख ले, माचिस के डब्बे पे सुइयां रख के उसको बैलेंस करे। तो अजान ने तो कहा कि उन्होंने ये ट्राई किया लेकिन इतना काम नहीं किया, पर उसके बजाय अच्छा ये है कि ये जो सामान्य से उपाय बताए गए हैं उनको हम उनका प्रयास करें। फिर अगला जो निवरण है वो है उद्धच्च कुक्कुच्च यानी रेस्टलेसनेस। ये उत्पन्न होता है जब हमारा जो माइंड है बहुत ही बिजी हो, अनेक प्रकार के उसके अंदर विचार चल रहे हों, जब आप किसी प्रकार की प्लानिंग कर रहे हों, बहुत सारा क्रियाकलाप आसपास चल रहा हो, तो चित्त के अंदर एक बेचैनी का भाव उत्पन्न होता है क्योंकि बहुत सारे विचार वहाँ पे चल रहे हैं, तो ठहरने की कोई अवस्था नहीं है। तो उसके लिए अजान ने उसका उपाय बताया कि स्टे ग्राउंडेड इन हियर एंड नाउ, यानी कि आप बस ठहर जाइए जो इस समय हो रहा है, इस क्षण की जो सच्चाई है उसमें। और उन्होंने याद दिलाया भगवान की वो मुद्रा जहाँ पे उनके उनकी एक हाथ की उंगलियां ज़मीन को छू रही हैं। तो ये यानी कि ज़मीन पे, आप ज़मीन पर उतर आइए, आप अपने दिमाग में जो घूम रहे हैं विचार वहाँ से उतर कर आप एक बार ज़मीन पर आ जाइए और ठहराव की स्थिति में आ जाइए। जैसे अजान खुद के लिए बताती हैं कि वो मिल्शियम हर्मिटेज जहाँ पे वो रहती हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो अकेली वहाँ पे होती हैं, और उस हर्मिटेज के बारे में उन्होंने ही स्थापित की है, सबसे ज़्यादा वो ही जानती हैं। तो ये आसान हो सकता है कि कोई भी काम जो करना हो वो स्वयं ही उसको कर लें, लेकिन तभी तभी उसको शायद सर्वोत्तम तरीके से किया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति के मन में भाव आ सकता है। लेकिन उसकी बजाय अपने किसी भी प्रकार की रेस्टलेसनेस जो है, विचलन की स्थिति है, उससे वो बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा करना चाहता है, भले वो उसे उतने अच्छे से ना कर सके लेकिन फिर भी वो उसे करने देती है, क्योंकि उन्होंने ये प्रण लिया है कि जब कोई इस प्रकार के कोई फेस्टिवल चल रहे हों, कोई बहुत क्रियाकलाप चल रहा हो, तो जिस चीज़ को वो पहले पकड़ बनाएंगी जिसके ऊपर, वो है आंतरिक स्थिरता की स्थिति, एक स्टेडीनेस बनाएंगी अपने अंदर, एक भगवान बुद्ध की पुत्री होने के नाते। और वो उस समय इस मंत्र का उच्चारण करती हैं, चंदासिरी इट्स ऑल राइट, यानी चंदासिरी सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक ही चल रहा है। तो इस प्रकार से वो अपने मन को शांत करती हैं। अजान सुचितो ने एक रिट्रीट ली थी, तो उस समय उन्होंने रिट्रीट के समय उसको शुरू करते हुए ये कहा कि यहाँ पे बहुत सारे काम है करने के लिए, बहुत कुछ करना होगा। तो जब बहुत कुछ करना होता है, अक्सर सामान्य जीवन में हम लोग उसे जल्दी जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि बहुत कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे उसके बिल्कुल विपरीत अजान सुचितो ने कहा कि क्योंकि बहुत कुछ करना है, हम बहुत धीरे धीरे करेंगे और सजगता के साथ करेंगे। तो अजान चंद्रसिरी ने देखा कि हाँ, इस तरीके से करने से बल्कि काम ज़्यादा बेहतर तरीके से हुआ। आखिरी निवरण है विचिकित्सा यानी डाउट, और उसके लिए आज जो हमने क्वान की एक्सरसाइज की थी, तो उसके अंदर एक ऐसा प्रश्न पूछा गया जिसका कोई उत्तर होता ही नहीं है, तो वो हमारे मन को एक डाउट की या संशय की स्थिति में ले जाता है, क्योंकि उसका उत्तर नहीं है तो एक उलझन सी सामने आ जाती है। और ये एक ऐसा ये डेलिबरेटली बनाई हुई प्रैक्टिस है ताकि आप उस स्थिति का अनुभव कर सके कि जब आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है, इसका क्या उत्तर हो सकता है, नॉट नोइंग, उस नॉट नोइंग को का अनुभव करना और उसके अंदर ठहर पाना, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा साधन है हमारी साधना के लिए। कई बार अजान से लोग प्रश्न पूछते हैं कि मृत्यु के लिए कैसे तैयारी की जाए, तो अजान ने कहा कि एक तो हाँ, सजगता को आप पुष्ट करते रहिए, पर दूसरा यह है कि मृत्यु जो है वो वास्तव में नॉट नोइंग या अनिश्चितता का एक परम उदाहरण है कि आपको क्या पता कि वास्तव में कौन जान सकता है कि मृत्यु के समय क्या होता है, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, क्या होगा, वो अनुभव कैसा हो सकता है, इसको कौन जान सकता है। तो इसलिए यदि ये जो अनिश्चितता में ठहराव की स्थिति है उसे हम अपने दैनिक जीवन के अंदर यदि बना पाएँ, तो मृत्यु के समय पे भी हम उसको, उस स्थिति को बना पाएंगे और उसके अंदर स्थिर और शांत रह पाएंगे। कई बार ये जो रेस्टलेस डाउट की स्थिति है, ये निर्णय लेने की जब जहाँ पे परिस्थिति होती है वहाँ पे आता है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, ये ठीक है या वो ठीक है। तो ऐसे में अजान ये अपना उन्होंने बताया कि वो क्या उपाय करती हैं कि वो
वो वॉक पे चली जाती हैं। तो बजाय इसके उलझने की कि ये करना ठीक है या वो करना ठीक है, अपने आप को वापस प्रेजेंट में, वर्तमान में स्थिर करती हैं। और उन्होंने देखा है कि जब हम ऐसा करते हैं तो अपने आप ही धर्म धर्म हमें सहायता करता है, और आंसर, और जो उत्तर है, जो सही उत्तर है, वो अपने आप ही प्रकट हो जाता है। पर उसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है और ये भरोसा करना होता है कि हाँ, उत्तर प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए जब कोई निर्णय की स्थिति करनी हो, आप कभी कभी उसके लिए लिस्ट भी बना सकते हैं कि क्यों ये करना चाहिए, एक एक आइडिया अच्छा है या दूसरा, एक के ऊपर दूसरा काम क्यों किया जाए। या किसी कल्याण मित्र से बात करें जो आपकी सोचने के तरीके को पे थोड़ी और रोशनी डाल सके और आपको ये देखने में, याद दिलाने में सहायक हो सके कि आप निर्णय जो भी करेंगे अंत में उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात अजान ने ये कही कि चाहे निर्णय कैसा भी हो, आप एक गलत निर्णय लेने को लेके भयभीत ना हो जाए। तो निर्णय जब लेने की स्थिति है, कुछ तो करना ही होगा, तो बजाय इसके कि उस उलझन में ही पड़े रहें, अच्छा तो यही है कि कोई भी एक निर्णय ले लें और फिर उसके ऊपर उसके अनुरूप काम करें, और फिर जो उसका फल आना है वो उसके अंदर उसको स्वीकार करने का भाव रखें।